हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। আজি আমি কৰিবলৈ লৈছো ক্লাস 9 হিন্দীৰ আলোক ভাগ 1 চেপ্টাৰ 1 হিম্মত और জিন্দগীৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ্স খিনি। তাৰ আগতে স্কুল অনলাইন আৰএছ পূজা তোমালোকে এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো হিট কৰি থোৱা যাতে মই যেতিয়া এটা ভিডিও আপলোড কৰোঁ সবতকে আগতে তোমালোকে নোটিফিকেশন পাই যোৱা। प्रथम क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करो। चारिटा আছে, তোমালোকে শুদ্ধটো বাছি উলিয়াব লাগিব। किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है? কোন মানুহবিলাকে সুখৰ स्वादটো टेस्टটো বেছিকৈ পায়? जो सुख का मूल्य पहले चुकाते हैं और उसका मजा बाद में लेते हैं। মানে আগতে যোনে কষ্ট পায় পিছত হে তেওঁলোকে তাৰ মূল্যটো বেছিকৈ পাব। ধৰা কোনোবা মানুহ এটা খুব পানীৰ পিয়া লাগি আছে, সি যেতিয়া পানীখিনি খাবলৈ পাব তেতিয়াহে তাৰ মূল্যটো সি বুজি পাব। ঠিক আছে, কাম টু দ্য नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है? पानी जितो अमृत तत्व থাকে तो কোনে চিনি পায়? जो धूप में खूब सूख चुका है। गोधूली वाली दुनिया में लोगों से अभिप्राय है जीवन को दाव पर लगाने वाले लोग, যোনে নিজৰ জীৱনটো एकदम कष्ट करके লৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह সাহসী মানুহ এজনৰ পৰিচয় কি? लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, মানে মানুহে কি ভাবে তাৰ অলপো চিন্তাই নকৰে। संक्षिप्त उत्तर दो। चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है? কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে জুনৰ যিটো এটা শীতলতা দিয়ে, জুনটোৰ ফালে চালে যিটো পোহৰ ওলায়, সেইটো শীতলতা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি এজনে পাব পাৰে? আসলতে चांदनी की शीतलता का आनंद वे लोग उठा पाते हैं जो दिन भर धूप में काम कर थके हारे घर को लौटते हैं, जिसके शरीर को अब शीतलता की ज़रूरत महसूस होती है। ঠিক আছে, যোনে দিনটো কষ্ট কৰি একদম বিৰাট অৱস্থা নাইকিয়া হয়, ঘাম বৈ ঘৰ আহি পাহি তেওঁলোকৰ সেই শীতলতাটো তেওঁলোকেহে অনুভৱ বেছিকৈ কৰিব পাৰে। लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से क्यों की है? सिंहर লগত অকলে যোনবোৰ মানুহ আগুৱাই গৈ থাকে তেওঁলোকক কেলে তুলনা কৰিছে? लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से इसलिए की है क्योंकि सिंह जंगल में अकेला निडर होकर घूमता है, वह भेड़ या भैंस की तरह झुंड में नहीं चलता। ঠিক আছে, অকলে সিংহই নিজক আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব পাৰে, কাৰো চিন্তা নকৰি কোনে কি কৈছে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে মানুহক যিটো ভয় নকৰা মানুহ তাক সিংহৰ লগত তুলনা কৰিছে। जिंदगी का भेद किसे मालूम है? जिंदगी का भेद उसे मालूम है जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता, सुख दुख झेल कर आगे बढ़ता रहता है। वह व्यक्ति यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी खत्म न होने वाली चीज है। लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है? लेखक ने जीवन के साधकों को यह चुनौती दी है, মানে জীৱনটোৰ সাধকবিলাকক এইটো মানে চ্যালেঞ্জ দিছে যে अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा? মানে অলপতে যদি আমাৰ সন্তুষ্ট হৈ যায়, যেনেহ'লে সাগৰৰ কিনাৰত বহি আমাৰ সন্তুষ্ট হৈ যায়, তেনেহ'লে ভিতৰত গৈ পেলাই মণি মুকুটাবোৰ কোনে বুটলি আনিব বুলি কৈছে। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने जिंदगी की कौन सी दो सूरतें बताई हैं और उनमें से किसे बेहतर माना है? लेखक ने जिंदगी दो सूरतें बताई हैं। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करता है और जगमगाती जीत को वह हासिल करता है। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए, हमजोली माने एकदम शेयर करा लाइफ माने फ्रेंडों निसिना बन जाए, जो न तो बहुत अधिक सुख पाते हैं और न उन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं, माने অলপতে সুখ পাই যায়, और लेखक ने थोड़े में गुजारा जीवन को ही बेहतर माना है। অলপতে যিবোৰ সন্তুষ্ট হৈ যায়, এগালমান বস্তু বুকুত বান্ধি লৈ ঘূৰি ফুৰাতকৈ অলপমান বস্তুতে যদি আমি সন্তুষ্ট আমাৰ লাইফটো আমি কেৰি অন কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা বুলি কৈছে আমাৰ লেখক ৰামধাৰী সিং দিনকৰজীয়ে। মই বাৰে বাৰে ৰামধাৰী সিং দিনকৰজী কবিতাবিলাকৰ লেখকৰ নাম বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ, কাৰণ এইবোৰ এক্সামত তোমালোকৰ আহে 1-2 মাৰ্কছৰ কাৰণে এয়া সোধে।
जीवन में सुख प्राप्त न होना और मौके पर हिम्मत न दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों? এতিয়া জীৱনত মানুহে সুখ নোপোৱা আৰু অপৰচুনিটি পায়ো মানুহে নিজৰ সাহসটো নেদেখুৱাটো ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কোনটোক মানিছে আৰু কেলে মানিছে? लेखक ने जीवन में सुख प्राप्त न होना को श्रेष्ठ माना है। सुख नपोৱাটোৱে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে, क्योंकि सुख भोग सभी को नहीं मिलता। সকলোৱে সুখ নোপাব, কেতিয়াবা নোৱাৰে। उसके लिए जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है আৰু সুখ পাবলৈ মানুহে চ্যালেঞ্জ বিলাকক মানে सामना কৰিব লাগে বুলি কৈছে, फेस करबो लगे बोली कैसे। पर जिसने जिंदगी में चुनौती भरे मौके पर हिम्मत नहीं दिखाई, उसे खुद की आत्मा से धिक्कार भरी आवाजें सुननी पड़ती हैं कि तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए, तुमने समय पर साहस नहीं दिखाया। पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है? पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को यह सीख दी गई है कि युधिष्ठिर को राज्य लाभ के लिए कृत दास बनने की कोई जरूरत नहीं। उसे जीवन के कष्ट से डरना नहीं है और फल प्राप्ति के लिए खुद पर निर्भर होना है। अतः जीवन के कष्ट से डरना नहीं है, बल्कि निर्भय होकर उसका सामना करना चाहिए। सप्रसंग व्याख्या करो। त्या प्रसंग माने हल कोनटू कविता की कोनখন তোমালোকৰ কিতাপখনৰ নাম কোনে লিখিছে এইখিনি লিখিব লাগে, আৰু व्याख्या माने হল তাৰ মিনিংখিনি। এইখিনি মই সদায় কৈ থাকোঁ, গতিকে এনেকৈ লিখিলো বা দি আছোঁ। বেছিকৈ কৈ গৈ থাকিলে অলৰেডি মই চেপ্টাৰটো বুজাই দিছোঁ, নাই চোৱা যদি চাই ল'বা প্লেলিষ্টত গৈ। মই শেষত প্লেলিষ্টৰ লিংক দি দিম। গোটেই ইমানবোৰ ছাবজেক্ট এতিয়াৰ পৰা পঢ়িলেহে পৰীক্ষালৈকে হ'বগে। Because we need to prepare for our upcoming exams, right? গতিকে আগৰ পৰা অলপ অলপকৈ পঢ়ি যাবা, নহ'লে পৰীক্ষাৰ আগত ইমানেই প্ৰব্লেম হয়, ইমানেই প্ৰেছাৰাইজ হোৱা, তোমালোক ইটো দিয়ক সিটো দিয়ক, তোমালোকৰ খেলি মেলি লাগি যাব, এনেকৈ মনত নাথাকিব ইমানখিনি। গতিকে ভালকৈ বুজি যোৱা এতিয়াৰ পৰাই, আৰু যিখিনি লাগে, যি লেসন বুজিবলৈ আছে মোলৈ মেছেজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিবা, মই লগে লগে তোমালোকক জনাম। My YouTube family is quite a big family now. 3000 subscriber students আছে মোৰ এতিয়া 3000ৰ ওপৰত। Thank you for your love and support. আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ কমেণ্টছবোৰ দিয়ে, মোৰ ইমান ভাল লাগে পঢ়ি, and really I am too encouraged for teaching. So এনেকৈ দি যাবা, কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে সুধিবা, মই ট্ৰাই কৰিম গোটেইখিনিকে মই এনসাৰ দিবলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে কিপ ৱাচিং দিছ চেনেল এণ্ড ডু ছাবস্ক্ৰাইব। যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো হিট কৰি থ'বা, তেতিয়া লগে লগে যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, মই ডেইলিয়ে দি থাকোঁ। ইংলিছ আৰু হিন্দীৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা 10লৈকে দি আছোঁ। HSৰ মই সোনকালে আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু মোৰ টাইমে এলাউ নকৰে, গতিকে মই দিব পৰা নাই। কিন্তু ডেইলি মই 6 to 10ৰ, মই এতিয়া 9, 10ৰটো ডেইলি আপলোড কৰি আছোঁ। গতিকে কিপ ৱাচিং দিছ চেনেল। বাৰে বাৰে কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ, আপোনালোকৰে উপকৃত হ'ব। গতিকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ইয়'ৰ পেচেঞ্চ। মই ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ গোটেই লিংকখিনি ইয়াত দি দিছোঁ, তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই চাই ল'ব পাৰিবা। যদি 9ৰ হয় 9ৰ, আৰু 10ৰ যদি হয় তেতিয়া 10ৰখিনি ক্লিক কৰি আগৰ ভিডিঅ'জবোৰ গোটেইখিনি আছে চাই ল'ব পাৰিবা।